Okay, so first of all, let's get an introduction to this environment that you are seeing here. So this box at the top left corner, this is the place where you write your code. So आपको कुछ भी यहाँ पे code लिखना है, it has to be in this screen, ठीक है? The screen on the box at the bottom left corner, यहाँ पे if you run any code in that box, वो यहाँ पे इसकी output नीचे शो होगी at the bottom left, right? At the top right, we'll see when we create new variables, वो हर जो भी हम variable इस file के अंदर create करेंगे, that's going to show up here on the right side here. ठीक है? I'm assuming all of you already have programming experience. In fact, I know for sure already all of you have programming experience. So the BSMT class, you have worked with C++ before, I think, and we've also done some work in R before. And the CS people, of course, they have done a lot of programming, so आप लोगों को भी इतना issue नहीं होना चाहिए. What we want to start with is some basic data types in R that are going to be useful for the next 10 or 12 sessions or so, जो हमारा जितना भी course रह गया. We're going to be concerned with 2 or 3 major data types in R. और उसके अलावा we do not need to know much else, so we'll just focus on that. ठीक है? So in your files that you should already have open right now, you should be seeing this code written there. ठीक है? Now, before I go to that, let me give you some introduction of how variables are assigned in this language, in R. So uske liye, so let's start with a very simple example. So let's say you have a variable that has a value of 2. अब इसमें जो assignment के variable है ना, उसके लिए we use an arrow like this. ठीक है? So you'll see x equals to 2 will also work in most of the cases. However, there are some issues that can arise with that. और जो ये arrow है, this is the safer option and the recommended option by the creators of R, because ये equality का operation जो है, ये कुछ और purposes के लिए भी use होता है, तो assignment के लिए हम ये arrow prefer करेंगे whenever we write our code here. ठीक है? So make sure variable assignment के लिए आप हमेशा ये arrow sign इस तरह से use करें left side पे. ठीक है? So for now, what we can do is we can try to run this code and see what happens. So the way to do that would be आप इस code को select करेंगे. ठीक है? So you can use your mouse or you can press shift and down to select this. तो मैंने यहाँ पे रखिए, for example, shift down press किया, मेरी row select हो जाएगी. All right. Now what I can do is I can press control enter, control plus enter, and that's going to run only this line of code there. Okay. Are all of you able to do this? Yes, sir. So when you do this, you will see at the bottom there, bottom left पे आपके पास वो show हो गया कि आपने क्या code run किया. ठीक है? And at the top right there, आपके पास ये show हो गया है आपके environment के अंदर कि कौन-कौन से variables आपके environment में अभी exist करते हैं. So for example, right now we only have one variable in our environment, and that is x, जिसकी value जो है that is 2. All right. Then we can assign, for example, another variable. Let's say there's another variable y. This is 6. I can run this code again. ये y की value देखें वहाँ पे 6 आ गई है. And then I can create another variable. So let's say z is equal to x squared minus y cube. तो ये क्या करेगा? x की value ऊपर से उठाएगा, that is 2. y की value यहाँ से उठाएगा, that is 6. And it will create another variable z like this. और वो z की value वहाँ पे देखें minus 212 calculate होके उधर आ गई. Right? So this is how it's going to work. So variable assignment के लिए आप ये इस तरह से arrow operator use करेंगे. So that's the main thing you need to know अभी तक. उसके अलावा there are many different data types that you will be dealing here. सबसे पहले जो अभी हमने यहाँ पे देखा है, this is a numeric data type जहाँ पे सिर्फ numbers हैं. It's 2, it's 6,
and then z is also a numeric variable because वो भी उसका result जो आया था that's minus 212. But then there could be some other data types as well. So one data type that we'll be dealing with a lot is the string or character data type, जो यहाँ पे string और characters को r एक ही तरह treat करता है. उसमें क्या आएगा? So let's say we have a variable called city. इसकी value हमें लाहौर रखनी है. वो कैसे assign करेंगे? We have to make sure it's written in inverted commas there. So let's say city की value I want to assign as लाहौर. मैं इसको inverted commas में रखूंगा तो ये वेरिएबल एक असाइन हो जाएगा सिटी के नाम से और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी लाहौर जो मेरे यहाँ पे राइट साइड पे शो हो रही है. राइट, सो दिस इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल. Similarly, I can create another type of variable, and that's called a Boolean variable or a logical variable. So what I can do is I can create a variable. Let's say this is variable called yes, और इसकी वैल्यू में यहाँ पे इस तरह true रख देता हूँ. True is a Boolean operator in R. True, false, both of these are Boolean operators. इसको भी आप यहाँ पे run करेंगे, इसकी ये true value आ जाएगी. ठीक है. Now let's try a function that is called class. Class function use होता है to find the type of each variable, the type of any variable. So class के अंदर आप जो भी argument रखेंगे या जो भी input रखेंगे, that's going to tell you कि हर variable की type क्या है. All right. So let's say हम यहाँ पे करते हैं class of x, and if you run that, you will see at the bottom left there जो output आपको मिली है that's numeric. So x की class क्या है? It's a numeric type variable. Similarly, you can do the same thing for the other variables. You can try city. When you do it for city, you see it's a character variable. Character variable जो है R के अंदर you call string variables characters. ठीक है, character variables. अब उसमें single character हो, एक से ज़्यादा characters हो, वो सारे जो है वो R उसको एक ही तरह treat करता है. And then you have this other variable जो हमने yes assign किया था वहाँ पे, it's a logical variable. ठीक है, it's a true value, it could be a false value, or it could be anything like that. So these are the three base data types that we're going to be concerned with. जो एक single value की data type है वो इन तीनों में से कोई हो सकती है. ठीक है, and you should be comfortable with all of these. So अभी तक हमने क्या देखा है? असाइनमेंट कैसे करनी है वेरिएबल को और कौन सी तीन मेजर डेटा टाइप्स हैं जो आप उनसे डील कर सकते हैं. Any questions until here? So Uzair, you raised your hand. You want to say anything? सर अगर मल्टीपल वेरिएबल्स को चेक करना हो उनकी क्लास उनकी टाइप को तो उसकी भी यही होगा फंक्शन. Okay, so let's try what happens if you were to do this. What happens in that case? You cannot pass multiple variables here, so it's not going to work in this case. Class variable उस पे नहीं चलेगा. The way to do this is आप यहाँ पे किसी भी function की आपने help file check करनी हो कि वो फंक्शन क्या करता है exactly. You can do it like this. तो आप क्वेश्चन मार्क वहां पे डाल सकते हैं. You can run that और यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास वो शो हो जाएगा कि वो फंक्शन क्या करता है. In this case, it only accepts one single value. उसके एक आर्गुमेंट है, देखें यहाँ पे सिर्फ एक इनपुट एक्सेप्ट करता है. मल्टीपल वेरिएबल्स की क्लास चेक करनी हो एक फंक्शन के थ्रू, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट राइट नाउ, बट आई कैन चेक दैट आउट later. Abu Bakr, do you know of a function that can check classes for multiple variables at the same time? Abu Bakr, are you there? Okay, so let's move on for now. So for right now, आप एक वेरिएबल की एट अ टाइम चेक कर सकते हैं यूजिंग दिस वेरिएबल. आई चेक दैट अप. अगर आप एक कोई फंक्शन ऐसा है जिससे आप मल्टीपल वेरिएबल्स की एक ही टाइम पे चेक कर सकते हैं, राइट? नाउ लेट्स लुक एट द कोड दैट आई gave you in that file. इसमें मैंने क्या किया है? So ऊपर देखिए मैं हर वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक वैल्यू असाइन कर रहा था, राइट? Now I can also have variables जिसके अंदर I have more than one values. ठीक है, उसमें यहाँ पे इस वेरिएबल को हम वेक्टर टाइप का भी, इस टाइप ऑफ वेरिएबल को हम वेक्टर्स भी कहते हैं इसके अंदर. ठीक है,
तो अब इसका तरीका क्या है? लेट्स से मैंने I have a data set. I want to create a data set basically जिसके अंदर 5 different variables हैं. Right? All of you have seen data sets in Excel. उसमें क्या होता है? In the top row you have the column name. उसके नीचे फिर उसकी different observations होती हैं. Right? So if you look at it here, आपके पास ये name, province, population, corona cases, capital, all of these are those column names that you would expect at the top of the Excel sheet. आपके पास जो first row में column names होते हैं, these are the column names. अब उसके अंदर हर column के अंदर I want to assign some values. So for example, जो मेरा first column है name का column, उसके अंदर what I want is I want to put Lahore there. ठीक है? इसी तरह प्रोविंस के अंदर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में लाहौर का प्रोविंस रखना चाहता हूँ. पॉपुलेशन वेरिएबल के अंदर आई वांट टू राइट कि उसका उसी सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, उसमें अभी तक कोरोना केसेस कितने हैं, और द लास्ट वेरिएबल इसके अंदर जो है बूलियन वैल्यूज हैं. उसका मतलब क्या है? if a city is a capital of either a province or of the country, then this value is true. Otherwise, this value is false. Okay, so for example, Lahore is a capital. Lahore is the capital of Punjab, so we have true here. Faisalabad is not the capital of any province. It's not the capital of Punjab, so we have false here, and so on. All right. So अब हमने क्या किया है? We have created vectors for each of those columns that would have appeared in the Excel file. जब हम अभी तक हमें सिर्फ डेटा सेट देखे हैं एक्सेल के अंदर या CSV फाइल्स के अंदर, तो हम उसको रेप्लिकेट यहाँ पे करने की कोशिश करें. ठीक है? So in the first column we have all of these values: Lahore, Faisalabad, Karachi, Multan, Quetta, and so on. We have 9 total cities. इसका मतलब क्या होएगा? इस डेटा के अंदर we're going to have 9 rows. ठीक है? अगर आप एक्सेल की टर्म्स में देखें, हमारे पास 9 रोज होंगी इस केस के अंदर. Yes, Umar, you have a question? यस सर, मैंने पूछना था कि जब हम स्ट्रिंग्स पास करते हैं तो ये क्या केस सेंसिटिव है या कि नहीं, और बूलियन Yes, वैल्यू क्या केस सेंसिटिव हैं कि नहीं? yes. So, अगर हम यहाँ पे देखें ट्रू को मैं इस तरह लिख दूं, उसका कलर चेंज हो गया. You see that? So it has to be यस capital like this. अगर वो कैपिटल नहीं होगा, उसको एज बूलियन उसको ट्रीट नहीं करेगा. ऑलराइट. अब ये जो है ये तो केस सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी मैं कुछ इस पे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ. अब ये सर्टेन फंक्शंस पे डिपेंड करेगा कि अगर मैंने सिंध के ऊपर फॉर एग्जांपल कोई मैंने फंक्शन अप्लाई करना है जिसमें ये वाला स्ट्रिंग जो है यूज हो रहा है. नाउ इट विल डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर फंक्शन कि वो फंक्शन इसको किस तरह से ट्रीट करता है. डज दैट फंक्शन ट्रीट this as case sensitive or not. So for example, Excel के अंदर if you remember we had functions for search and find. ठीक है? हमारे पास दो फंक्शन थे, एक सर्च और एक फाइंड का. एक उनमें से केस सेंसिटिव था और एक उनमें से केस सेंसिटिव नहीं था. अब ओरिजिनल डेटा जैसा भी हो वो मैटर नहीं करता. मैटर क्या करता है कि जो फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन है उसने उसको केस सेंसिटिव कंसिडर किया कि नहीं किया. तो यहाँ पे तो जनरली तो आपके ये एस कैपिटल है तो आपके सारे डेटा में एस कैपिटल ही शो हो रहा है. ठीक है? वो फिर आगे फंक्शन पे डिपेंड करेगा किस तरह से उसको यूज करना है. Okay, now the second variable here, I have the corresponding provinces for each of those cities, and so on. I have population, I have corona cases, and I have this boolean data type जिसमें ये है कि वो capital है या नहीं है. So this is the data from 5th of April. इससे recent मुझे नहीं मिला था अभी. So this is until 5th April. Okay. Now what I want to do is I want to tell R कि ये सबको मैंने अभी तो मैंने देखे अलग अलग ये वेरिएबल्स असाइन किए हैं. नाउ R is treating it as separate variables. एक वेक्टर इसके पास है नेम का, एक वेक्टर है इसके पास प्रोविंस का, एक वेक्टर है इसके पास पॉपुलेशन का, एंड सो ऑन. नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू क्रिएट अ सिंगल डेटा सेट आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज वेक्टर्स. ठीक है? जिस तरह मेरे पास एक्सेल के अंदर एक टेबल होता है प्रॉपर डेटा का, आई वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट. अब R के अंदर the data type that we're going to be using the most for data analysis is called a data frame.
तो आप जब डेटा लोड भी कर रहे होंगे फ्रॉम एन एक्सेल फाइल और फ्रॉम अ CSV फाइल और फ्रॉम एनी अदर टाइप ऑफ फाइल, तो वो जब आप लोड करेंगे R के अंदर, वी आर गोइंग टू डू दैट यूजिंग डेटा फ्रेम्स ऑल द टाइम। ठीक है, अब डेटा फ्रेम क्या होता है? डेटा फ्रेम इज वेरी सिमिलर टू व्हाट यू हैव इन एक्सेल के बाद टॉप रो में आपके पास कॉलम के नेम्स होंगे, उसके नीचे ऑब्जर्वेशन। नाउ लेट्स क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम दीज वेरिएबल्स। अब डेटा फ्रेम्स क्रिएट करने का के लिए you have this function called data.frame. ठीक है, now from here on you can try to replicate it, whatever I'm doing here, you can try to follow it as it is. I did not share the whole code with you because in that case you would not be writing it yourself, and unless you write it yourself, uh, you will not basically understand it that well. आपको खुद साथ साथ follow करना है, then you'll be getting some errors. आप कुछ जो है वो syntax की mistakes करेंगे, and then you learn कि अच्छा यहाँ पे ये mistake कर रहा हूँ मैं और ये नहीं होनी चाहिए. That's why I'm not sharing the whole code, so you can follow with me and get some practice. Okay, so what I'm doing here is I'm using this function data.frame. ठीक है, अब इसके अंदर देखें, जब आप ये फंक्शन लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, आपके पास आ रहा होगा कि इसमें so let me write it here, data frame. जब आप ये लिखेंगे आपके पास ये देखिए ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, इसके आर्गुमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, अगर आपने इसमें चेक करना है, इसमें और डिटेल में देखना, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं और क्वेश्चन मार्क जाके आपके पास राइट साइड पे खुल जाएगी उसकी डिस्क्रिप्शन, एंड यू कैन गो देयर एंड सी कि ये फंक्शन एग्जैक्टली क्या करता है। यू कैन रीड थ्रू इट। ये इसके फर्स्ट में फर्स्ट ये जो यूजेज वाला सेक्शन होता है उसके अंदर उसमें लिखा होता है कि आर्गुमेंट्स कौन कौन से हैं इसके। ठीक है, नाउ इट्स फर्स्ट आर्गुमेंट यू सी इज डॉट डॉट डॉट। व्हाट इज दैट सपोज्ड टू मीन? दैट सिंपली मीन्स कि आप इसको जितने मर्जी वेक्टर्स पास कर सकते हैं, एंड इट्स गोइंग टू ट्रीट ऑल ऑफ देम एज सेपरेट कॉलम्स ऑफ द डेटा फ्रेम। ठीक है, जब आप वो सब पास कर देंगे उसके बाद फिर आप वो रो नेम्स असाइन कर सकते हैं। विल कम टू दैट लेटर ऑन। अभी के लिए ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू पास ईच ऑफ दोज वेक्टर्स दैट वी हैव क्रिएटेड अबव टू दिस डेटा फ्रेम। तो हम क्या कर रहे हैं? if you look at this part of the code, data frame के अंदर we are saying name, comma province, comma population and so on। जो ऊपर हमने 5 vectors create किए हैं, हम उन 5 vectors को यहाँ पे data frame की function के अंदर we are just inputting them there. All right, and then this data frame is being assigned to a new variable जिसका मैंने नाम रख दिया cities_df, which means cities का data frame है। राइट, अब ये देखें राइट साइड पे फंक्शन इन सब वेक्टर्स को डेटा फ्रेम में क्रिएट कर रहा है, डेटा फ्रेम बना रहा है, एंड देन वी आर असाइनिंग दैट डेटा फ्रेम टू दिस वेरिएबल कॉल्ड cities_df। राइट, नाउ इफ यू रन दिस कमांड, अब इसको सेलेक्ट करके यू प्रेस कंट्रोल एंटर, आपके पास एक डेटा फ्रेम। यस, you okay, before you do that you'll have to first run the code above। अब उसको पूरे को रन करेंगे and then you can run this code below और ये आपका डेटा हो जाएगा। यस अजहर? ये कॉलम में बन जाएगा ना डेटा फ्रेम से? यस, सो विल जस्ट लुक एट इट in a few seconds। अब एक दफा रन करें इस कमांड को। so once you run this command, आप राइट साइड पे देखेंगे बाकी सारे वेरिएबल्स आपके नीचे आ रहे थे। You see, आपकी वैल्यूज के अंदर सारे जो आपने वेक्टर्स डाले हैं, कुछ भी डाले, ऑल ऑफ दिस इज अपीयरिंग अंडर दिस सेक्शन कॉल्ड वैल्यूज। जो डेटा फ्रेम्स आप क्रिएट करेंगे उसके लिए एक अलग सेक्शन बना देगा ये, एंड दैट्स दिस डेटा सेक्शन। ऑलराइट, अब इसके अंदर देखें cities_df आया, इट टेल्स यू इट्स 9 ऑब्जर्वेशंस ऑफ 5 वेरिएबल्स। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव क्रिएटेड हियर। अब इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस वेरिएबल के ऊपर आपके पास एक विंडो खोल देगा यहाँ पे, जिसके अंदर वो डेटा उस टैबुलर फॉर्म में शो हो रहा है। Does this make sense? अब ये उसी तरह का टेबल बन गया। यू हैव रो नंबर्स, आपके पास 9 रोज हैं, एवरी रो हैज 1 सिटी इन इट, और आपके पास 5 वेरिएबल्स हैं।
Right? सर ये और आपने अगर इसको रोज में करना हो सर ये आपने टैप करके खोला है? मैंने उस पर क्लिक कर दिया, बस ये राइट साइड पे मेरे पास cities_df आ रहा है, उस पर मैंने क्लिक कर दिया. Alright. Or you can simply write this as well, view cities_df. अब okay. Yeah, view आपको capital लिखना पड़ेगा. You can just type this function there, capital view and capital VIEW, और ये आपको वो डेटा फ्रेम खोल देगा in a new tab. फिर आप वापस जाके वापस अपने कोड में जा सकते हैं. Yes, Azhar. सर मैं कह रहा था अगर इसको रोज में इनकी हेडिंग्स लिखनी हो तब भी यही होगा. नहीं. सो बाय डिफॉल्ट आपके पास जो भी डेटा सेट होता है उसमें आपकी जो कॉलम का जो वेरिएबल का नेम होता है ना, दैट्स गोइंग टू बी एट द टॉप ऑफ द रो. आपके ये फर्स्ट रो के अंदर ये आपका जो है वेरिएबल का नाम आ रहा होता है. दिस इज द स्टैंडर्ड एंड दिस इज द स्टैंडर्ड दैट यू ऑलवेज गोइंग टू यूज. यस, आपके पास लेफ्ट साइड पे ये नंबर्स कुछ आ रहे हैं 1 से लेकर 9 तक. आप इनकी जगह कुछ और डाल सकते हैं यहाँ पे, दैट इज पॉसिबल. हाउएवर वेरिएबल का नाम जो है वो वही होगा जो ऊपर आता है आपके पास एट द टॉप. ठीक है, हम इनको चेंज कर सकते हैं. 1 से लेकर 9 तक जो लिखा हुआ है, वी कुड हैव समथिंग एल्स इन प्लेस ऑफ दीज नंबर्स, लेकिन वो फिर भी वेरिएबल का नाम वो नहीं होगा. वेरिएबल का नाम हमेशा वो होता है जो ऊपर आ रहा होता है सबसे टॉप पे. इज दैट क्लियर? ओके. Okay. So once we have this data frame, now we can start working on this data frame and see what we can, how we can manipulate this data frame in different ways. और इसके ऊपर फिर हम बाद में देखेंगे in our future lessons कि हम इसको different analysis इसके ऊपर किस तरह से run कर सकते हैं, graphs कैसे build कर सकते हैं. But before anything, हम कुछ चीजें जो हमें already Excel में करनी आती हैं, we're going to do that in R as well. ठीक है, for example basic sorting, filtering, aggregating, जो आप pivot tables बनाते थे, pivot charts बनाते थे, how you can do all of that stuff in R as well. Excel के अंदर, Excel has a limitation whenever your data size increases, मतलब बहुत आपके पास थोड़ा सा जो है बड़ा data हो जाए, Excel is going to crash there. ठीक है, वो बहुत बड़े data sets को handle नहीं कर सकता. So आपको for many of those cases, R is going to be a much better option. And also, R is going to offer you much more options to customize as well. आपके पास यहाँ पे क्योंकि आप खुद से manually coding कर रहे हैं, आप खुद से लिख रहे हैं exactly आपको क्या क्या चाहिए, you can customize as much as you want. आपको जो भी चीज़ exactly चाहिए, आप वो उस तरह से code लिख के you can achieve that. और वो reproduce भी कर सकते हैं because आप सिर्फ data change करना होगा, you can run the whole code on any kind of data और वो दोबारा से वो चीज़ reproduce कर सकते हैं. Let's try to start with some basics. So now that we already have this data frame here, that's cities_df. Now let's see how we can do some filtering and subsetting, etc. अच्छा, सबसे पहले एक तो वो तरीका है उसको देखने का कि आपके पास न्यू विंडो में वो पूरा डेटा खुल जाए. You can also look at the first few rows of the data. उसके लिए सर ये बताएंगे कि व्यू वाला कौन सा होता है, ये आपने क्यों लिखा था, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जो हमने यहाँ पे किया था ना, राइट साइड पे हमने उस पर क्लिक किया था उधर जी जी. इसके ऊपर, और वो नई विंडो के अंदर वो खुल गया था. वही चीज अगर आपको फंक्शन लिख के करनी होती ना, अगर मैं ये लिख के करता हूँ, वो देखिए वो मुझे नेक्स्ट नई विंडो में वो खोल देगा टेबल. ठीक होगा, ठीक. इट्स द सेम थिंग एज दैट. ठीक है, अब वहाँ पे Sir, क्लिक भी कर सकते हैं, खुद से फंक्शन लिख सकते हैं. यस जलीद. sir, how do I comment out a section of the code? Because my definition of vectors वो सारा comment में ही आ गया और वो run नहीं हो रहा है इस वजह से. ओके, सो वो सारे कमेंट में आई गेस इसलिए आ गया होगा कि आपने इन्वर्टेड कॉमास जो है ना वो कहीं पे क्लोज नहीं किए हैं. सो बेसिकली इसके अंदर वन वे टू कमेंट इज दिस हैशटैग के बाद आप कुछ भी लिखते हैं तो वो कमेंट हो जाता है, बट दैट्स फॉर अ सिंगल रो. कोई भी एक रो में आपने कुछ कमेंट करना हो वो हैशटैग यूज करते हैं. आई एम अज्यूमिंग अगर मल्टीपल रोज के लिए करना हो, आप ये देखें आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ डाल देंगे ना तो वो पूरा जो है उसको कमेंट आउट कर देगा. तो आपके पास कोई ऐसा इन्वर्टेड कॉमा वहां पे रह गया जो क्लोज नहीं हुआ हुआ. दैट होल थिंग इज कमेंटेड आउट. Were you able to resolve that, Jalit?
No, sir, there is no inverted comma. Like I opened this code as it is, and it's not been able to run. When I search wiki online, I can't uncomment that entire section. अच्छा, let's try one thing. आप एक दफा ऊपर जाके इस वेक्टर्स वाले पार्ट के ऊपर वाले जाके एक इन्वर्टेड एक डबल कोटेशन मार्क डाल दें, सिर्फ एक डबल कोटेशन मार्क. ट्राई दैट वंस. इफ दैट डजंट वर्क, उसके नीचे आके एक सिंगल कोटेशन मार्क डाल दें एंड सी इफ दैट वर्क. Because most probably आपका इसी तरह कुछ हुआ होगा, इन्वर्टेड कॉमा के आपने क्लोज नहीं किया, वो कमेंट आउट हो गया. Yes, sir, it's Okay. working. Okay, Thank you. So once you're done with this, you can also have a quick look at some starting rows of the data. आपके पास एक function होता है head का. This is very useful. अगर आप वो पूरे data को दोबारा एक नई window में नहीं खोलना चाहते, ये head का function use कर सकते हैं. And it's going to show you the first 5 or 6 rows of the data. नीचे आपकी output वाले जो box है उसके अंदर. तो ये मेरे पास first few rows आ गई हैं इसके अंदर. All right. And then there's another function called str. It's going to tell you the structure of the data frame. Let's try to run this. So str के अंदर मैंने वो exact variable उस तरह से लिख दिया. And if I try to run this like this, देखिए नीचे में मुझे बता देगा कि उसके अंदर जितने भी variables हैं उनकी data types क्या हैं. Right? तो अगर मैंने run किया तो नीचे देखें output window में. First of all, it's telling me cities underscore df. This itself is a data frame. So the first row आपको show हो रही है यहाँ पे. It itself is a data frame which has 9 observations of 5 variables. Now for each of those variables, it's telling me कि वो variable की क्या data type है. So name जो है, it's a factor variable. Factor variable basically होता है categorical variable. So Aptabad, Faisalabad and so on. जो भी आपके string variables normally होते हैं, R is going to consider them as factors. कि आपके पास ये इस name variable के अंदर 9 different categories हैं. Province variable के अंदर we have 5 different categories. Right? Then population and corona cases, that these two are numeric variables, and the last variable there, capital, that's a logical variable. ठीक है, आपको ये str function जो है, it's going to tell you कि data का structure कैसा है. All right. Okay. Now let's see how we can access certain elements of this data frame. So what you want to do now is we want to start with subsetting and filtering data frames. अब इसका एक तरीका ये है जो R के अंदर already inbuilt कुछ methods हैं जो आप use कर सकते हैं. Once we're done with some introduction to this, there's a very useful library जिसमें बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, and we'll learn how to use that as well. But first of all, let's try and see कि यहाँ पे R के अंदर simple indexing कैसे कर सकते हैं, right? Now first of all, आपके पास ये data frame है cities underscore df. All right. Now let's say I want to access whatever is in the first row and the fourth column of this data set. तो आप क्या करेंगे, आप ये square brackets use करते हैं हमेशा subsetting के लिए in R. जो भी आप comma से पहले लिखेंगे, that's going to tell R कि आपने कौन सी रो उठानी है, और कॉमा के बाद जो है आप R को बता रहे हो कि आपने कौन सा कॉलम उठाना है. ठीक है. So from cities underscore df variable, what you want is you want the first row. तो आप 1 लिखेंगे तो R will understand we want the first row, and then the second argument is going to be कि आपको column number कौन सा चाहिए. We can write 4 there, right? Now if you run this by selecting that code and running it by pressing Control Enter, you see 847 is the result. 847 मुझे output मिल गई है. Excuse me, sir. Sir, Yes. सर इसकी array की indexing 1 से शुरू होती है? Yes, R में indexing starts with 1. So in most of the programming languages, आपकी indexing 0 से start होती है. So those of you who worked with C++ before, आप लोगों ने देखा होगा 0 से indexing start होती थी.
एंड पीपल फ्रॉम CS बैकग्राउंड, आप भी बाकी लैंग्वेजेस में मोस्टली जो है 0 से स्टार्ट होती है, R में इट स्टार्ट्स विद 1, ठीक है? So you need to remember that. All right. Now मुझे देखें 847 रिजल्ट मिला है, तो आई कैन गो बैक टू माय डेटा देयर। डेटा में देखें फर्स्ट रो के अंदर फोर्थ कॉलम में 847 था, वो मुझे उसने रिटर्न कर दिया उस कमांड से, राइट? नाउ सिमिलरली लेट्स से मुझे कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं चाहिए थी, मुझे पूरी रो चाहिए कोई। तो लेट्स से मुझे सेकंड रो पूरी चाहिए, सेकंड रो के अंदर जो भी पड़ा हुआ है आई वांट दैट कंप्लीट रो। तो रो के अंदर तो आप 2 लिखते हैं बिकॉज वी वांट द सेकंड रो, लेकिन कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ दें, ठीक है? वी डू नॉट स्पेसिफाई एनी वैल्यू फॉर द कॉलम एंड दैट्स गोइंग टू गिव अस द कंप्लीट सेकंड रो। सो वी कैन ट्राई टू रन दैट और मुझे बता देगा सेकंड रो के अंदर ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं, फैसलाबाद, पंजाब एंड सो ऑन। All right, and similarly it works the same for columns as well. अगर आपको पूरा कोई कॉलम चाहिए, आप कॉमा से पहले कुछ भी ना लिखें, कॉमा के बाद you can type something like, for example, let's say I want the fourth column, that is corona cases वाला column, and that's going to return to me सारी values जो मेरे fourth column के अंदर पड़ी हुई हैं, ठीक है? So generally जब भी आप एक single column select करेंगे ना R के अंदर, आपको वो वैल्यूज इस तरह से हॉरिजॉन्टली शो कर देगा। जब आप मल्टीपल कॉलम्स को भी सिलेक्ट करेंगे वो आपको प्रॉपर टेबल के फॉर्म में देता है, लेकिन सिंगल कॉलम को वो इस तरह से रो के फॉर्म में दे देता है। सो दीज आर ऑल द वैल्यूज, दीज वो भी उस पे आते हैं, अभी उस पे भी आते हैं। सो दीज आर ऑल द वैल्यूज दैट वर देयर इन दैट सिटीज डेटा फ्रेम, सिटीज डेटा फ्रेम के कोरोना केसेस वाले कॉलम के अंदर। ऑलराइट, But now you see there's a problem here, and that is कि आप कभी भी जब इंडेक्सिंग कर रहे होते हैं, आप इस तरह तो नहीं करते कि आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि मुझे फोर्थ कॉलम से वैल्यू चाहिए, बिकॉज यू सी अगर आपके पास डेटा सेट बहुत बड़ा है, सो लेट्स से आई हैव 100 वेरिएबल्स इन माय डेटा सेट, आई कैन नॉट रियली रिमेंबर और चेक अगेन एंड अगेन कि अच्छा कौन सा वेरिएबल किस पोजीशन के ऊपर आ रहा है, राइट? तो मुझे वो पहले जाके वरना पोजीशन देखनी पड़ेगी एंड देन आई कैन स्पेसिफाई कि अच्छा मुझे ये नंबर्ड कॉलम चाहिए। दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क कि मैं पहले जाके हर किसी पे जाके नंबर देखता रहूं और फिर जाके यहाँ पे वो इंडेक्स लिखूं उसका, because that's very time consuming and that's not feasible most of the time. हम देखते हैं कि how can we use the variable names instead, but before we get to that I see there's another thing that we could do here, and that was कि आप multiple rows and multiple columns कैसे select कर सकते हैं। So you remember from Excel as well, आपने अगर range select करनी हो ना कोई भी, आप ये column use करते हैं, ठीक है? So for example, what I want to do here is I want to select the first 3 rows. अब 3 rows के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? 1 column 3. तो मुझे first से लेकर third row तक तीनों rows देगा, and then columns वाले केस के अंदर I'm specifying कि मुझे third column चाहिए। तो when I run this thing, मुझे क्या मिल जाएगा? थर्ड कॉलम में जो फर्स्ट 3 रोज के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, let's check what it is. थर्ड कॉलम, that's the population column. फर्स्ट 3 रोज के अंदर क्या डेटा है? I have लाहौर की population, that's 111 something, that's 320 something, then 149 something. I go back there, I have 111 something, 320 something, and 149 something. Here is the output. ऑलराइट, तो मुझे उसने थर्ड कॉलम से फर्स्ट 3 रोज का डेटा उठा के नीचे रिटर्न कर दिया। सिमिलरली यू कैन डू द सेम थिंग फॉर कॉलम्स एज वेल। लेट्स से मुझे थर्ड लेट्स से फर्स्ट से थर्ड रो को मैं वैसे ही रखता हूँ, बट नाउ आई नीड डेटा फॉर फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम बोथ, ठीक है? तो मुझे फर्स्ट से लेकर थर्ड रो तक चाहिए, एंड आई नीड फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। आई कैन रन दिस एंड आई सी आई हैव फ्रॉम द डेटा देयर आई हैव द फर्स्ट 3 रोज, एंड फर्स्ट 3 रोज का मुझे सिर्फ फर्स्ट 2 कॉलम्स का डेटा शो हुआ है, नेम एंड प्रोविंस। आई हैव दिस सबसेट हियर शोन देयर,
ठीक है। अभी देखें, अभी मैं जो भी रन कर रहा हूँ इट्स जस्ट शोइंग मी एज द आउटपुट। आप इस किसी भी चीज को अगर आपने सेव करना हो, यू कैन असाइन दैट टू अ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल ये जो अभी मुझे आउटपुट मिली है, आई कैन असाइन दैट टू अ वेरिएबल एंड सेव दैट इन अ सेंस। सो फॉर एग्जांपल आई कैन से दिस इज टेस्ट वेरिएबल, और मैं इसको यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। तो ये देखें आप राइट साइड पे एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, टेस्ट वेरिएबल, जिसके अंदर सिर्फ ये वाला डेटा है, right? So you can also save whatever subsetting or filtering you're doing there. Any questions until here? Nope, it's fine. Any other comments? Go ahead. No, sir. Thank you. सर आप सिलेक्टेड कॉलम्स को कर सकते हैं सिलेक्ट? Selected columns, हम देखिए second जो हमने देखा है ये 1 column 2, तो आपने selected columns क्लिक किया है। नहीं अच्छा, मतलब पहला और चौथा। Okay, yes, we can do that as well. So अच्छा, इससे पहले there's one thing that I did not explain to you. ऊपर जब हमने देखे वेक्टर्स असाइन किए थे ना, हमने कैसे किया था? We did not just write all of them in a bracket without anything else. हमने एक और चीज ऐड की है पीछे, एक कैरेक्टर ऐड किया, that's the C here. तो जब भी आप कोई वेक्टर क्रिएट करते हैं ना, आप ये उसका स्टैंडर्ड सिंटैक्स है, आप C से स्टार्ट करते हैं and then you open a bracket and then you write down all the values that you want in that vector and then you close that bracket. ठीक है, वेक्टर असाइन करने का ये मेथड होता है। तो when you come here, अगर आप जो तला आप कह रहे हैं आपको फर्स्ट और फोर्थ कॉलम चाहिए, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? We can create a vector like that. वेक्टर क्रिएट करने के लिए आप C से स्टार्ट करेंगे, विल ओपन योर ब्रैकेट्स, और आप उसको बता देंगे आपको कौन कौन सी स्पेसिफिक वैल्यूज चाहिए। वी वांट 1, 4। नाउ एक्सेल विल नाउ आर विल अंडरस्टैंड कि आपको ये फर्स्ट और फोर्थ जो है कॉलम्स चाहिए फ्रॉम द डेटा फ्रेम। वी कैन ट्राई टू रन दिस एंड we get this as the result. So first column was name column and the fourth column was corona cases column. ये आपको ये values मिल गई। Okay sir, thank you. Okay, so I can keep the previous one as well. Okay, clear हो जाए। I'll try to share this file. Yes. Sir, is it possible that we can search for a specific string, for instance, city, और जिस तरह हम लाहौर सर्च करते हैं और वो उसके relevant सारी details हमें एक table में form करके share कर दें? Yes, that is possible. We'll come to that. So we'll come to that. We'll come to all of those things gradually. ठीक है? इस तरह जो चीजें आप कर सकते हैं, मतलब जो चीजें हम सोच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, फिल्टरिंग भी कर सकते हैं, आप स्पेसिफिक वैल्यू पे कंडीशन लगा के वो भी कर सकते हैं। So all of that is possible. We'll come to each of those things gradually. ठीक है? Okay. Sir. Yes. Sir, can you just explain C वाला part a little bit again कि वो हमने vectors assign करने के लिए C क्यों use किया? Is it the syntax? Yes, so it's the syntax for creating a vector. So whenever you want to create a vector, आप सिर्फ ये 1, 4 अकेला नहीं लिख सकते, आपको R को बताने के लिए कि आपने वेक्टर क्रिएट करना है, you have to write the C there. सर ये रोज के लिए भी काम करेगा? Yes, you can do this there as well. आप कह सकते हैं कि मुझे specific rows चाहिए, तो आप यहाँ पे कोई वेक्टर बना सकते हैं। For example, you can, so let me create another one. Copy कर लेते हैं, so I can do this the same thing there. So let's say मुझे 4th or 7th city चाहिए, whatever that is. So 4th and 7th, I want these two cities. I can run this और मेरे पास वो डेटा आ जाएगा। 4th city was मुल्तान, 7th was इस्लामाबाद, और यहाँ पे कॉलम्स में मेरे पास फर्स्ट और फोर्थ कॉलम आ गया। All right. Now, when you're writing code, by the way, please take care of a few things कि आप ना अपने spacing सही रखें proper. For example, whenever you have a comma somewhere, आप उसके बाद एक space दें. These things actually make it easier to read. The code is easier to read this way. अगर आप बिल्कुल कोई spacing नहीं देंगे, तो थोड़ा सा ना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा उसको समझना कि आपने क्या लिखा हुआ है। तो make sure कि आप इसमें proper spacing रखें. Whenever you have a full stop somewhere,
आप उसको उसके बाद स्पेस दें, कॉमा के बाद स्पेस दें, and make sure you comment your code साथ साथ as well. For example, whatever you're doing here, for example यहाँ पे मैंने किया cities को मैंने इंडेक्स किया 1 और 4 पे, I have commented there कि अच्छा मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, so that anybody else who reads your code, he or she understands कि आपने हर स्टेप के अंदर क्या किया हुआ. So make sure whatever line of code you write or whatever block of code you write comments with that कि ये block या ये line क्या कर रही है exactly, ठीक है? So that it's easier for someone who's checking your work to understand. It's easier for yourself as well when you open this code again at a later point. आपको समझ तभी आएगी अगर आपने comment किया होगा कि क्या क्या आपने किया हर step के ऊपर. Okay. Now, so we have seen कि हम इस तरह से numbers को use करके किस तरह से indexing कर सकते हैं. Yes, Zainab, you have a question? Excuse me, sir. Sir, what does it means कि we are creating a vector? इसका क्या मतलब है? Vector is basically, अब देखें ऊपर हमने क्या किया था, सबसे पहले we started assigning single values to variables. For example, x के अंदर सिर्फ एक value ये 2 पड़ी हुई है, ठीक है? y के अंदर एक value 6 पड़ी हुई है. वेक्टर का क्या मतलब है, आपके पास मल्टीपल वैल्यूज असाइंड है एक सिंगल वेरिएबल को, राइट? सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेम एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं इतनी सारी वैल्यूज देखें डाल रहा हूँ. अब ये 9 वैल्यूज हैं, तो मैंने 9 वैल्यूज का एक वेक्टर क्रिएट कर दिया. डज दैट मेक सेंस? यस सर. और सर एक और क्वेश्चन मुझे, जैसे ये जो नेम के आगे जो आपने सारे लिखे सर, ये मेरे ब्लैक कलर में ही आ रहे हैं, आपके ग्रीन में आ रहे हैं. That doesn't matter. It's just the way your environment is. आप लोगों का सबका जो आपने डाउनलोड किया है, is your background white or black? व्हाइट सिरे से ब्लैक कैसे करते हैं? नहीं सर, Sir, white. इससे इसकी नहीं बात करिए, जो लिखा हुआ है मैं इसकी So, बात कर रही हूँ. ग्रीन फॉन्ट उसमें है ना, कलर में है. लाहौर, फैसलाबाद और ये सब. okay, that's fine. That doesn't matter. Okay. Black इसका होता है background. I myself prefer white, but I've seen many people use black background as well. I'm not sure. यहाँ पे आप देखें कहीं पे option होगी view में, कहीं पे जहाँ पे वो change हो सकता है. But you can check that later on. आप try कर सकते हैं. If you prefer black background, you can use that as well. I myself prefer white. अच्छा, अब इसमें देखते हैं. Okay. Let's say you have this variable here. What you want to do now is you want to do that same thing जो आपने ऊपर किया था. मैं इस डेटा फ्रेम के अंदर से फर्स्ट 3 रोज उठाना चाहता हूँ सिर्फ एक वेरिएबल की, एंड दैट इज द पॉपुलेशन वेरिएबल. पॉपुलेशन वाले कॉलम के अंदर से मैं फर्स्ट 3 रोज देखना चाहता हूँ. ऑलराइट, सो यू कैन डू इट दिस वे एज वेल कि आप नंबर के बजाय यू कैन टाइप द नेम ऑफ द वेरिएबल, बट इट हैज टू बी इन इन्वर्टेड कॉमास. ठीक है, आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो कॉलम का नाम लिख सकते हैं. सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर द एग्जैक्ट पोजीशन that variable is at in the data. सर अब यहाँ पे केस सेंसिटिव वाला सीन होगा, क्योंकि हमने ऊपर अगर उसको पॉपुलेशन को सपोज पी कैपिटल किया हुआ है, तो यहाँ नीचे भी हमें उसको इसी तरह करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएबल को हम कॉपी जो कर रहे हैं यहाँ पे. Yes, so generally speaking, whatever you write in inverted commas, आपने उसको case sensitive ही assume करना है. ठीक है, so in this case I don't think it's going to work. Let me just try. Yeah, it doesn't work. So it is case sensitive. ठीक है, so generally speaking, जब भी आप कोई भी चीज inverted commas के अंदर लिखते हैं, उसको आपने हमेशा case sensitive ही treat करना है. ठीक है, okay. Now, so when I run this code, I see these same values. मैंने ऊपर run की थी यहाँ पे before somewhere. So I can type this. मैं copy कर लेता हूँ यहाँ पे. So this was what I ran before. जब मैंने population वाला run किया था. So you can do this. You can achieve the same thing using this variable name. अब इसी तरह यहाँ पे if you wanted to select multiple variables, आप यहाँ पे again उस तरह से vector create कर सकते हैं. You'll start with C. Again, I'll create another
row. Sir, can you please, sir? Yes. Sir, can you please repeat the first two lines of code under the population column? Uh, The written selecting the first three element of population column. I've actually missed out. okay, this one. No, the one in which you have written the cities. Yes, this one. Okay, so in this case, all I'm doing is I'm telling R give me the first three rows from the third column. So अगर मैं data में देखूं मेरे पास third column के अंदर population पड़ी हुई है, so that's why I'm writing 3 there. But of course, as I said, it's not feasible to remember कि हर variable जो है उसकी position क्या है, especially when you have a very large number of variables. So you can also do the same thing using the variable name itself. So आप 3 की जगह population itself लिख सकते हैं, right? Now let's try the same thing here जो हमने C14 किया था. हमने क्या किया था वहाँ पे? We basically extracted the data in the first column and the data in the fourth column. So we can do the same thing here. हम कह सकते हैं कि मुझे first column दे दो जो मेरे पास name column है, and I want the corona cases column. All right, corona underscore cases, yes. So I've told R कि मुझे first 3 rows चाहिए from these 2 columns. When I run this code, I'll have these results as I had before as well. ठीक है, तो आप numbers भी use कर सकते हैं, but this is better कि आप column names use करें for indexing. Any questions until here? No, sir, it's fine. Okay, so let's move on. Sir, examination purpose के लिए, would you prefer us to make a variable for every entry we make, like as in subsetting or filtering? It really depends on what you want to achieve. अगर आपने अभी देखें, अभी तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये रन करके देख रहे हैं कि अच्छा आउटपुट कैसी आती है ना. We're just trying to understand what happens in each case, right? But when you're working on some assignment, you may have to filter something or subset something and then use it for some purpose. ठीक है, तो उसके लिए आपको उसको सेव करना पड़ेगा ना कहीं पे. अब देखें यहाँ पे मैं जो चीजें भी रन कर रहा हूँ, they're not being saved anywhere. बस रन होके they're just showing in the results there, लेकिन मेरे पास मैं उनको यूज नहीं कर सकता दोबारा से कहीं, because मैंने सेव नहीं किया उनको कहीं पे. So I want to use that thing, use those variables, use those values somewhere again for any calculation, for any analysis. मुझे उनको सेव करना पड़ेगा, जो किसी वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा ताकि उस वेरिएबल को मैं बाद में यूज कर सकूं. Is that clear? Yes, sir. Okay, so let's move on. So now we have seen how we can select an entire column and how we can select particular columns from the data frame. So we've seen these 2 ways of doing this. So for example, हमें चाहिए corona cases वाला पूरा column. We want to extract the whole column. So we have seen these 2 ways until now. कि अच्छा हम ये कर सकते हैं, comma के बाद we can write 4, or we can write comma के बाद we can write the variable name, right? But there's a shortcut as well that when you're writing complex code जिसके अंदर आप एक ही row के अंदर बहुत सारे multiple operations run कर रहे हैं, apply कर रहे हैं, उसके अंदर this shorter way of writing is preferable because आपके जो कोड पढ़ना है वो बहुत आसान हो जाता है relatively. ठीक है, इसमें क्या होता है, आप कोई भी डेटा फ्रेम जो भी आपके पास डेटा है, आप उसका नाम लिखेंगे पूरा, and then when you type the $sign after that, it's going to show you all the columns that exist in that data frame. तो आपने डेटा फ्रेम का नाम लिखा है, उसके बाद सिर्फ आपने $sign टाइप किया है, आपके पास वो सारे कॉलम्स जो उसके अंदर हैं, सारे वेरिएबल्स जो उसके अंदर हैं, वो सारे शो हो गए हैं, right? And then you can use any of those variables. You can write name there, for example, or in this case, you can write corona cases. आप tab दबाएंगे तो auto complete भी हो जाता है tab से. And you can use the variable like this as well. So cities underscore df $sign के बाद you can type the column name और आपको
वो बता देगा पूरा. But of course, there's a limitation here, and that is कि आप सिर्फ एक कॉलम को कर सकते हैं इस तरह से एट अ टाइम. आप मल्टीपल कॉलम्स नहीं कर सकते. अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स चाहिए, जिस तरह हमने ऊपर किया था यहाँ पे, you'll have to use the other way जो हमने ऊपर किया स्क्वायर ब्रैकेट्स में. you'll have to stick with that. लेकिन अगर आपको सिंगल कॉलम के ऊपर कुछ चीज करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने फिल्टर कभी अप्लाई करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू वुड प्रेफर कि आप ये डॉलर साइन यूज करें. फॉर एग्जाम्पल जलीद आस्क्ड कि हमने अगर कोई फिल्टर अप्लाई करना होता कि मुझे सिर्फ वो वाली रोज चाहिए जिसके अंदर सिटी नेम जो है दैट इज लाहौर, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? फिल्टरिंग के लिए आई कैन यूज दिस सिंटैक्स डॉलर साइन वाला. We'll see how to do that later on, but that's just the idea. ठीक है? Is this clear? आप एक डॉलर साइन भी यूज कर सकते हैं to access a particular column. Okay. And of course, you can assign that column to any variable if you want. We've seen that before. So अगर आपने ये पूरा column किसी variable को assign करना है because you want to use that later on, you can do that as well. ठीक है? Now let's see how we can do filtering. So let's see here. यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? I have this capital variable in the data set as well. अब देखिए capital variable क्या है? It's a Boolean variable. It's a logical variable. तो ये कब true है? It's true when the city is a capital and it's false otherwise. Let's say I extract whatever is there in this capital column. और मैं देखता हूँ मेरे पास ये सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, राइट? ये पूरे कॉलम के अंदर जो भी वैल्यूज है वो यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया. नाउ लेट्स से आई असाइन दीज वैल्यूज टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल, तो बिकॉज मैं इसको यूज करना चाहता हूँ बाद में, इसलिए मैंने इसको सेव कर लिया एक वेरिएबल के अंदर. ठीक है? मैंने इन सब वैल्यूज को इस वेरिएबल में असाइन कर दिया कैपिटल अंडरस्कोर वेक्टर. ये मैंने नाम खुद ही चूज किया, इट्स आर्बिट्रेरी नेम. अब जरूरी नहीं है कि आपको सेम नेम यूज करना है. So I've assigned this last column in the data to a separate variable. ये मेरे पास कैपिटल अंडरस्कोर वेक्टर वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने इसको असाइन कर दिया. Now if I just run this variable, इसको बस मैं सिर्फ रन करता हूँ, मेरे पास आ जाएगा इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज पड़ी हुई हैं. Now I can use this thing to filter my data frame now. So मेरे पास क्या पड़ा हुआ था यहाँ पे? I have cities underscore data frame. This is my original data frame. Let's say what I want to do is I only want to extract the names of the cities that are capital. Let me repeat. I only want to extract the names of the cities that are capital. The way to do this would be कि मैंने उसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स स्टार्ट किए. रिमेंबर, कॉमा से पहले क्या होता है? आप रोज को रेफर कर रहे होते हैं, कॉमा के बाद आप कॉलम्स को रेफर कर रहे होते हैं. मुझे क्या चीज चाहिए? मुझे नेम चाहिए, तो मैंने वहां पे तो नेम ही यूज किया है. लेकिन रोज का के लिए आई ओनली वांट स्पेसिफिक रोज. ठीक है? अब वो स्पेसिफिक रोज कौन सी होंगी? दिस कैपिटल अंडरस्कोर वेक्टर इज गोइंग टू टेल मी कि मैं कौन कौन सी रो उठाऊंगा. तो देखिए ये लॉजिकल वेरिएबल था. तो अब ये देखिए लॉजिकल वेरिएबल के अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं. The first value is true, the second is false, then I have true, then I have false, and so on. तो जहां जहां पे इसकी वैल्यू ट्रू होगी, we're going to get only those cities as the output. Aram, let me complete. I'll come back to you. So when I run this, you see मेरे पास क्या रिटर्न आएगा इसका? I have Lahore, Karachi, Quetta, Islamabad, Peshawar. I only have the capital cities returned here. ठीक है? So I'll have a couple of minutes break here, and I'll answer your question here. I'll just take 10 more minutes after this. So Arham, you had a question, you can ask. सर ये आखिरी लाइन जरा फिर से एक्सप्लेन कर दे, समझ नहीं आई.
Okay, I'll do that. अभी अजान हो रही है यहाँ पे, so I'll just wait for 1 minute. Zishan, you have a question? सर मुझे यही पूछना था कि ये जो कैपिटल वेक्टर आपने डिफाइन किया है कि हाउ डज दिस डिफाइन कि ये खाली ट्रू वैल्यू को ही बताएगा मैं क्योंकि अभी आपने जब पहले इसको रन किया कैपिटल वेक्टर को उस समय ट्रू फॉल्स जो जो उस वेरिएबल के अंदर वैल्यूज थी उसने वो सारी बता दी थी। तो ये स्पेसिफाई वो ये सॉफ्टवेयर की बाय डिफॉल्ट है कि वो खाली ट्रू वैल्यू हमें शो करेगा? Okay, let me come to this as well. Yes, sir. हाँ. सर आपके कोई वीकेंड के ऊपर ऑफिस आवर्स हो गए कि अगर ये फिर से मतलब रिकॉर्डेड सेशन देख के उसके बाद करें तो अगर ना समझ आए कुछ तो? Generally speaking, जो office hours होंगे, they are going to be part of the class in a sense, because online classes में ऐसे है कि हमारा जो class time officially है ना, that's 45 minutes, and then we have 15 minutes for office hours, and that's where we can answer questions. So generally मैं क्या करूँगा, we're going to have more time for classes, तो उसी के class के साथ साथ जिस तरह मैं अभी question answer कर रहा हूँ, उसी तरह क्लास के दरमियान में ही I'll be answering your questions. For example, अभी आपके कोई questions हैं, we can respond to these in the next class. During the live session, अगर आपको दरमियान में questions है, you can always write on classroom और वहाँ पे हम respond कर सकते हैं. So I'm not going to have an extra live session for answering questions. That's going to be part of the class. तो हमारी class थोड़ी सी extended होगी. ठीक है सर। अच्छा सर, वो मैंने एक और चीज़ पूछनी थी आपसे कि सर वो जो आपने लिंक भेजी थी आर इंस्टॉल करने की, उसके Yes. अंदर जो उसके एंड पे ना उसने कस्टमाइज किया था थोड़ा सा, तो मेरे पास वो दोनों इंस्टॉल हो गए, जो उसकी कस्टमाइज करे बगैर भी था और जो उसके मैंने मतलब जो उस वीडियो में हुआ होता है वो करके, तो Okay. मैं उनके वही वाला यूज़ करना है अज्यूमिंग जो कस्टमाइज कर लिया था। I'm not exactly sure what you're referring to. Maybe once we end our class, Abhi, Abu Bakr may be able to better guide you about that. मुझे खुद install किए हुए it's been 3-4 years, तो मैंने बहुत ज़्यादा मुझे अभी का नहीं पता. I'll have to review that. मेरे पास काफी पुराना version अभी पड़ा हुआ है. But Abu Bakr should be able to guide you to that. ठीक है? ठीक है सर। Okay. Cities_df. So what was the question? Yes. So capital vector के अंदर मैंने अभी देखे मेरे पास क्या values आ रही हैं, true, false and so on. अभी ये तो मुझे सिर्फ ये बता रहा है कि इस वेक्टर के अंदर सारी values कौन सी पड़ी हुई हैं, ठीक है? अभी जो मैंने नीचे लिखा है ना, cities_df, और इसके अंदर मैंने first रोज वाले जो स्पेस है उसके अंदर मैंने ये बूलियन वेक्टर डाला है, ये बेसिकली इस डेटा फ्रेम को फिल्टर कर रहा है. फिल्टर करने का तरीका आर में क्या होता है, R basically considers कि whenever you have a true value here, it's going to show you that row, and whenever you have a false value here, it's going to skip that row. ठीक है? वो हर रो के लिए एक boolean ऑपरेटर की बेस पर डिसाइड करता है, ट्रू या फॉल्स की बेस पर डिसाइड करता है कि whether it's going to show you that row or not show you that row. अभी हम देखें, अभी तो हमारे पास ये वेक्टर ऑलरेडी जो है इसके अंदर पड़ा हुआ था ट्रू फॉल्स वाला. नाउ अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई और फिल्टर करना हो, तो फॉर एग्जांपल इफ यू वांटेड टू शो ओनली सिटीज इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब, उसके लिए हमें ये बूलियन वेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा उसके अंदर, एंड आई विल शो यू हाउ टू डू दैट एज वेल. अभी वो देखते हैं. यस सर. क्वेश्चन एड्रेस हो गया. मैंने यही पूछना था कि अगर हम किसी और कॉलम को करेंगे Yes. तो Okay. उसका We'll come to that. रेलेवेंट. We'll come to that. Sir, Yes, Jalil. sir, how do we extract false वाले vectors, false वाले जो हैं जो capital नहीं है? जो capital नहीं है. नहीं है cities, yeah. So you can basically just write an opposite of this. So यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, इसको आप कर दें non equality का, I guess ये होता है not equal to true. Let me just try if it works. Yeah. So basically मैंने क्या कहा है,
whenever this is not equal to true, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है, कैपिटल वेक्टर में जो वैल्यूज हैं, when they are not equal to true, give me the names of those cities. तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या आ गया, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, एबटाबाद. Does that make sense? Yes, sir. Thank you. Okay, so अभी के लिए, अभी मैं सिर्फ आपको ये बताया था कि boolean operator किस तरह से चलता है. Now let's say what I want to do instead is कि मैं ये filter करना चाहता हूँ कि पंजाब वाले सिटीज सिर्फ शो कर दें. ठीक है, अब वो कैसे कर सकते हैं? Again, I can start with the data frame. I can open the square brackets, and now I can write down a condition for that. So मेरे पास कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे जिसमें मैंने कंडीशन लगानी है? I want to apply a condition on the province variable. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रोज पे मैंने कंडीशन लगानी है, रोज को फिल्टर करना है. तो रोज वाली स्पेस के अंदर I will say कि province has to be equal to. अब देखिए जब आप इस तरह से कंपैरिजन करते हैं ना, आप ये डबल इक्वालिटी वाला साइन यूज करते हैं. if you remember from your C++ days as well, जब आपने इस तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करते हैं ना, आप डबल इक्वल का साइन लगाते हैं, वो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, वरना वो असाइनमेंट कर देता है. आपने क्या करना है, डबल इक्वालिटी का साइन, डबल इक्वालिटी यूज करनी है. तो व्हेनेवर प्रोविंस इज इक्वल टू पंजाब, यहाँ पे देख लेते हैं पंजाब का P कैपिटल है. यस, सो व्हेनेवर कैपिटल इज इक्वल टू पंजाब, give us the name of that city, and we get this. So we get Lahore, Faisalabad, Multan as the output. ठीक है? सर इसको Yes, एक दफा रीड करके बता देंगे क्या मतलब है? Okay, so what we're trying to do here is we want to extract from this data frame the cities that are in province of Punjab. Now, if you look at this syntax, अब देखिए, remember मैंने आपको बताया था रो से पहले हमेशा क्या होएगा, आप कॉमा से पहले हमेशा क्या होएगा, आप रोज के बारे में बता रहे होंगे यार को. कॉमा के बाद क्या होएगा, you'll be telling something about the column. तो कॉलम तो हमें पता चल गया, हमें नेम एक्सट्रैक्ट करना है. ठीक है, रो में हमें कंडीशन अप्लाई करनी है. हमें कौन सी रोज चाहिए? वी ओनली वांट दोज रोज वेयर प्रोविंस is equal to Punjab. So that's Lahore, Faisalabad and Multan. हम देखें जब हमने रन किया ये, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, that's Lahore, Faisalabad and Multan. ये जो नीचे लेवल्स लिखा है ना, इट्स जस्ट टेलिंग यू कि इस वेरिएबल के अंदर कौन कौन से पॉसिबल कैटेगरीज हैं, कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज हैं जो आ सकती हैं. लेकिन जो असल में जो हमने ये रन किया है कोड, उसकी ये आउटपुट है, लाहौर, फैसलाबाद एंड मुल्तान. Does that answer your question, Azhar? यस सर, डज सर. बस एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि हमने प्रोविंस जो यहाँ पे वेरिएबल नेम है और नेम जो भी एक वेरिएबल नेम है जो कॉमा के बाद लिखे, तो हमने उनको डिफरेंट तरीके से क्यों लिखा हुआ है? उसको कॉमास के अंदर लिखा हुआ है जबकि उसको वैसे लिखा है. Yes, so that's just the syntax basically. So आप जब यहाँ पे वेरिएबल को कॉल कर रहे होंगे, एज इन वेरिएबल को आपने बताना है कौन सा वेरिएबल आपने एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें आप इन्वर्टेड कॉमास डालते हैं. कि जब आप कंडीशन में अप्लाई करते हैं तो आप जो है उस पे वो नेम नहीं, उस पे इन्वर्टेड कॉमास नहीं डालते हैं. It's just the syntax. There's no specific reason for that as such. अगर इसमें आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास डाल देंगे ना, तो इसको जो है ना वो बेसिकली एज स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, उसको वो प्रोविंस वेरिएबल नहीं ट्रीट करेगा. यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे ना आर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप वेरिएबल नेम, अच्छा आई गेस दिस माइट बी द रीजन, आप यहाँ पे आर को वेरिएबल नेम पास कर रहे हैं. ठीक है, वेरिएबल नेम आप उसको बता रहे हैं कि आप जाके देखो डेटा फ्रेम के अंदर इस नाम का वेरिएबल जो है वो मुझे रिटर्न कर दो. अब जब आप उसको बता रहे हैं नाम कौन सा होना चाहिए, तो आपने आज स्ट्रिंग उसे दिया. ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप बेसिकली उस कॉलम को यूज कर रहे हैं. यू आर नॉट टेलिंग आर द नेम ऑफ दैट कॉलम, आप उसको उस कॉलम को डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, उसमें अगर आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास डालेंगे तो वो क्या करेगा, इसको एज स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, और एक्सेल जो आर जो है वो ये समझेगा कि you are trying to
फॉर दिस कंडीशन कि जब प्रोविंस ये जो स्ट्रिंग है व्हेन दैट इज इक्वल टू दिस पंजाब स्ट्रिंग, दैट डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज दे कैन नेवर बी इक्वल। तो यहाँ पे आप बेसिकली कॉल कर रहे हैं उस प्रोविंस कॉलम को। यस उमर। सर मेरा क्वेश्चन था कि हम किस तरह एरेज की जो सी पोजीशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक से कि हमने फाइंड आउट करना है कि सर्टेन नंबर कौन सी पोजीशन पे पड़ा हुआ है। सर्टेन नंबर कौन सी पोजीशन पे पड़ा हुआ है? फॉर एग्जांपल लेट्स से पंजाब है और पंजाब और लाहौर, लाहौर जो सा मेन पॉइंट है जिससे हम यानी प्रोविंस पंजाब में आ जाता है, तो लाहौर कौन सी कॉलम और कौन सी रो है उसकी, तो अगर ये फाइंड आउट करना है तो उसका क्या सिंटेक्स होगा? अब वो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा जो है क्योंकि अब वो बेसिकली अब बैकवर्ड प्रोसेस है, वो आप जाके उसमें मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। अब लाहौर इसमें देखें, हमारे पास इसके अंदर तो एक सिंगल वैल्यू है, लेकिन पंजाब जो है, अब आप अगर पंजाब इसमें सर्च करेंगे तो उसकी 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं। आपके पास एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू, तो उसको आपको तीनों रिटर्न करनी पड़ेंगी, तीनों के इंडेक्सेस रिटर्न करने पड़ेंगे। आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज पॉसिबल as it is. Again, I'll have to look for it. I'm not sure about this. Okay. Excuse me, sir. Yes. So, Omar, can you please write down this question and post somewhere, ताकि I remember to look it up. Post in classroom, maybe. Yes, Talha. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आप ये कंडीशंस लगा रहे हैं तो ये ऊपर से कॉलम्स को यूज कर रहा है, हमारे वेक्टर्स को यूज कर रहा है, सिटीज एक्सक्यूज मी सिटी डाटा फ्रेम के कॉलम्स को यूज कर रहा है या फिर ऊपर वाले वेक्टर्स को यूज कर रहा है इस कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए? नहीं नहीं, ऊपर वाले वेक्टर्स तो इसको मैंने कहीं भी नहीं बताया यहाँ पे। तो सर जब आपने खाली प्रोविंस लिख दिया है तो ये ऊपर वाला वेक्टर तो नहीं यूज कर रहा, मैं बस ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, दैट्स डिफरेंट। जब आप इसके अंदर कुछ लिख रहे हैं ना, आप देखिए उसको अंदर, जब यहाँ पे इसके यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, इट अंडरस्टैंड्स कि जो डेटा फ्रेम आपने यहाँ पे इनपुट किया है ना, इस आर विल बेसिकली गिव प्रायोरिटी टू द वेरिएबल दैट एग्जिस्ट्स इनसाइड दैट डेटा फ्रेम। उसके मतलब बाद ये वो कहीं इसका बाहर कॉलम ही यूज करेगा, उसका कॉलम यूज करेगा। लेकिन जस्ट टू बी श्योर यू कैन आल्सो डू दिस, यू कैन से cities df $, एंड दिस विल इंश्योर कि वो उसी का कॉलम यूज कर रहा है। सही, थैंक यू। अब ये भी कर सकते हैं इस तरह से। Excuse me, sir. Yes. Sir, since corona cases is a numeric variable, so can we do this के हम greater than 1000 cases अगर हैं उस city में, तो वो output कर दें and then we can put it as red alert cities as a variable? Yes, exactly. You can do that. So let's do that. So let's use exactly what you said. So red alert cities, okay. And what you can do is you can access that variable from the data frame. What you want is, अच्छा देख लेते हैं हमारे 1000 से ऊपर हैं भी, 1000 से ऊपर तो नहीं है, let's say 500 से ऊपर या 400 से ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, 400 से ऊपर। So what you want is cities corona cases, इसके ऊपर you want to apply a condition whenever this is greater than 400, return us the name of that city। ठीक है, हमने डेटा फ्रेम के अंदर we applied a condition on corona cases column कि whenever that is greater than 400, जिस भी रो के अंदर वो greater than 400 होगा, हमें वो वाला उसका नाम रिटर्न कर दो। ठीक है, we can run this, और ये रेड अलर्ट सिटीज क्या आपका एक वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसके अंदर लाहौर और कराची आपकी वैल्यूज असाइन हो गई हैं। यस उमर। उमर, ओके। सॉरी सर, वो मिस्टेकनली हो गई। Alright, so this is how we can filter these columns as well. अब देखें इसी तरह यहाँ पे आपको रेड अलर्ट सिटीज में लेट्स से आपको greater than 400 तो आ गया, you also want के साथ उसके एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस भी आ जाए। ठीक है, वो 400 से ज़्यादा तो है, लेकिन आई ऑल्सो वांट टू सी कि एक्चुअल नंबर क्या है वहाँ पे। मैं नेम के साथ साथ इस वेक्टर के अंदर मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे कोरोना केसेस वाला भी रिटर्न कर दें कॉलम। I'll have something like this।
तो अब मेरे पास उस वेरिएबल के अंदर ये आ गए हैं कि ये 2 cities हैं और उनके इतने cases हैं. So I can also do that. Is this clear? Okay, any questions until now? And because we're going to stop there, the next few things that I wanted to cover today, they're not going to be possible. So we'll discuss them next time. I'll try to record something on that and post before the next class. And along with that, what I will be doing, and by tomorrow, hopefully, is to give you a very short lab assignment. So आप 1 घंटे में आधे घंटे में कर सकते हैं maximum, so that you get some practice on what we have covered today. Sir, will you share this R file? I'll share this R file. I'll do that. Yeah, I'll do that right now. You don't need to submit anything right now. I'll just share this with you. You can use it. But I'll share an assignment. I'll share an assignment as well. आपको वो करनी होगी. Just about in half an hour assignment. और आपको वो as lab work submit करना होगा. Just as an announcement, there's no CP anymore in our course. So class participation वाला भी जो हमारा grade है, that's going to move towards lab work. ठीक है, तो lab work की weightage थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी पहले से. The exact grade breakup, I will be able to share that with you early next week, inshallah. ठीक है, थोड़ी बहुत जो changes हुई हैं, I'll be able to share that with you next week. Excuse me, sir. Go ahead. Sir, a little request. We have 2 very lengthy assignments due in next few days. So if you can please accommodate us with some more time by extending your assignments deadline. Okay, so that yeah, we can do that. The first assignment, the main assignment, we can have more time for that. But I will ask that you do not delay it too much, because उसके बाद फिर आपकी अगली assignments भी आ जाएंगे, फिर वो बहुत ज़्यादा delay हो जाएगा. ठीक है, Sure, sir. Thank you. और सर आपने वो सेशन भी एक देना था उस पे. जी बिल्कुल वो करना है. So मुझे so if you can stay back here for a few more minutes, I'll ask you the suitable time slots for that as well. Sure. Just give me a few minutes. So let me first ask Aisha. Yes. सर ये जो लैब वर्क है ये सबमिट कब कराना है? लैब वर्क तो अभी तो मैं पोस्ट नहीं किया, मैं पोस्ट करूंगा, उसके बाद फिर बताऊंगा कि सबमिट आपको you'll have time until Sunday at least. ठीक है sir, and it's going to be very short, just half an hour or so. सर ये कोड रन नहीं हो रहा जो आपने रेड अलर्ट के ऊपर लिखा है ना. अच्छा, वो रन हो रहा है. देखिए वो रन हो रहा है, आपको सिर्फ आउटपुट नीचे नहीं शो करता, बिकॉज जब आप ऐसे कुछ रन करते हैं ना लाइक दिस, तो वो आर बेसिकली ये इनहेरेंट है इसके अंदर कि वो उसको प्रिंट भी कर देता है साथ. ठीक है, वो प्रिंट कमांड एज अ प्रिंट कमांड ट्रीट करता है कि आपने इसको प्रिंट करना है. अब नीचे आप असाइनमेंट कर रहे हैं, आपने उस चीज को जो भी आपने वो किया था वहां पे, आपने उसको इस वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया. ऑल दैट इट नीड्स टू डू इज टू असाइन दिस इनटू दिस वेरिएबल. बस उसने असाइन कर दिया, दैट्स इट. अब आपने उसको देखना है कि इसके अंदर क्या है, तो आप सिर्फ इस वेरिएबल को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको रन कर दें. इट विल शो यू कि उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है उस वेरिएबल के अंदर. ओके. यस ज़ैनब. सर मेरा भी यही क्वेश्चन था. ओके सर व्यू किस तरह की है, एक बार दोबारा बता दें. You can just select that variable. इस तरह उसको हाईलाइट कर लें. Sorry. Right? Control Enter. जिस तरह आप कोड रन करते हैं, हमने सिर्फ उसको रन कर दिया तो वो नीचे आ गया आपके पास. थैंक यू. Okay, so one thing we need to discuss, the first thing we need to discuss now is the time slots for the tutorial. And there's one other thing. आप लोगों ने शायद data camp का नाम सुना, especially those of you who are from the CS background. So I'm trying कि उसका कोई हमारे पास एक free classroom setup हो जाए. The exercises that are there are going to be very useful. I would most probably just assign exercises from there if you're able to get access to that. तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी उससे बहुत अच्छी हो जाएगी, because that's literally the best tool that you can get on data science in general, और कोई भी एनालिटिक्स को चीज करनी है तो. I'm trying to get hold of free access to that. I'll update you on that as soon as I get an update, inshallah. ठीक है, so we'll most likely have our assignments on that अगर हो जाता है तो. तो फिर सर हम पहले वो असाइनमेंट करेंगे फिर ये असाइनमेंट करेंगे. वो और ये का क्या मतलब है, ये मुझे बता दें पहले. नहीं मुझे मतलब पहले डाटा कैंप वाली हम की असाइनमेंट से हम गुजरेंगे, फिर हम ये असाइनमेंट 1 आपकी वाली से गुजरेंगे, आप ये कह रहे हैं?
So data camp assignments, they are going to replace your lab work, not the proper assignments, right? वो आपके सिर्फ lab work replace करेंगे. So lab work अभी मैं आपको इसके ऊपर एक छोटे से कुछ tasks दूंगा अगर that's going to be extract. मैं वो data camp को use करके उनमें से वहाँ से कुछ exercise आपके साथ share कर रहा हूँ. अगर मुझे उसकी access मिल जाती है for all of you, तो आप वो चीजें directly वहाँ पे जाके run कर सकते हैं और it will grade you automatically as well, or it will offer you much better learning as well in the sense कि आप उसमें difficulty level जो है वो higher कर सकते हैं और आप उसको और उसके साथ जो है वो देख सकते हैं exercise जितनी ज़्यादा आप करना चाहें कर सकते हैं, and it's going to provide you a lot of practice as well. Okay, sir. I think that is a different thing. मैं एक्चुअली असाइनमेंट 1 के रिग्रेशन एनालिसिस वाले पार्ट के बारे में पूछ रहा था. assignment 1 is still going to be there. वो जो आप ये तो आपके individual assignments हैं, they are still going to be there. वो जो data camp है that can only replace lab work. ठीक है. अच्छा, अभी वाली assignment के लिए we basically wanted to have an extra session कि आप कोई regression के ऊपर questions हो या किसी और के ऊपर questions हो, कोई specific questions उस assignment के ऊपर हैं, तो we'll have a session of about let's say 45 minutes. तो उससे पहले what you would want to do is कि आप एक दफा assignment को properly go through करें and then you should have your questions ready कि आपको उसमें से क्या क्या exactly पूछना है. So let me know how soon you'll be able to do that. So we can do it on Saturday. That's one possibility. We can do it either. go through कर चुके हैं और attempt करने बैठे भी थे लेकिन वो. So have all of you gone through the assignment? If you have, we can schedule a session for tomorrow. No, sir. We can have it Sir, on I think Saturday works. Can it be on Monday? I have 2 submissions on Saturday आपने already. extend कर दी है deadline तो उसको Monday तक कर. आफ्टर सैटरडे का कर लें क्योंकि सैटरडे को हमारी सबमिशन है 2 असाइनमेंट्स की पहले ही. अच्छा. So Okay, so Monday what we can do is okay, so ठीक है, that is reasonable. We can do that. लेकिन I would recommend कि आप at least अगर regression वाला part नहीं हो रहा उतनी देर में, you at least try to build the rest of the model ताकि आपको बहुत ज़्यादा delay ना हो, because this is going to be the last extension to the assignment. इसके बाद और extend नहीं कर सकते because then you'll have the next assignment. Okay. All right, so. Okay, so we'll have the session right after our Monday class then. Okay. Okay, great. Any other questions, Arham? सर ये जो हमारी फाइनल प्रोजेक्ट होगा या असाइनमेंट जो आखिरी होगी वो ग्रुप्स में कर सकते हैं? Yes, that's most likely going to be in groups. लेकिन फिर वही है कि अभी कुछ limitations हैं, of course. आप लोग मिल भी नहीं सकते, उसकी presentation करनी थी, वो भी पता नहीं किस तरह से होगा अभी. All of these things are being planned. You will get an answer to most of them early next week, inshallah. ठीक है सर. Sir, what is the project? Final project? So basically, you'll have to work on some data set जो आप खुद भी choose कर सकते हैं. I'll give you some options as well, and you'll have to go through the entire analytics process जो हमने इस course में सीखा है. So you'll start from descriptive analytics. You can do it in R, you can do it in Excel. Then you'll move on to predictive analytics. That's going to be one of the models that we will be studying in the next few weeks. कोई भी आप machine learning model use कर रहे होंगे या आप कोई clustering कर रहे होंगे. So basically, it's going to be something that showcases your understanding of the whole course. तो आपने पूरा उसको जो भी आपने जितनी भी आपकी understanding develop हुई है course के अंदर, you have to try as much of that as possible. So it's going to be very open-ended. आप कोई specific requirement नहीं होगी. You have to use what you have understood from the course and apply that to extract as much information from that particular data set as is possible. उस पर जितना आप deep analysis कर सकते हैं, जितनी आप उसमें recommendations generate कर सकते हैं using your analysis, वो आपको करना होगा.